Good evening. Now let's start our talk show, episode 84. The only thing that stand between you and your dream is the will to try and believe that is actually possible. It's a beautiful quote quoted by Joel Brown. So, with this quote, I would like to bring our talk show named Conversation with Consultants with episode 84 of our guest talk series. Good evening, everyone. I'm Rima Kumari, ECR coordinator of SKANG, and I am your host for today's talk show. Before I begin our talk show, let me briefly introduce SK Associates and Group. We are an ISO certified management consulting firm registered under the MSMED Act 2006 with the Government of India. Our mission is to provide consulting service to student entrepreneurs globally, covering areas such as compliance, operations, marketing, research and development, human capital, strategic, and operations. Our passion lies in helping these budding entrepreneurs bringing their dreams to life and contribute to global economics growth. Entrepreneurship is a catalyst and change in innovation. It's a powerful force that can reshape industries, transforms lives, and make the world better place. We are committed to supporting student entrepreneurs on their journey, equipping them with the tools, knowledge, and network they need to succeed. Now, before I begin our show, let's take a moment to introduce our guest for today. It gives us immense pleasure to welcome Miss C.S. Manisha Mittal, proprietor of Manisha Mittal and Associate, to this special event. We are truly honored by your presence today and we are delighted to have you here in this talk show to share your insight with us. We would like to start this interview with our first question for you. Why should every entrepreneur protect their brand with a trademark? Good afternoon, everyone. Thank you, Rima, for giving me the opportunity to speak and to talk regarding the trademark. So, your question is why should entrepreneurs protect their brand names with the trademark? Trademark is basically a legal ownership which is given for a brand name registration for its logo. It is basically uh, it protects your identity. It protects the trust and builds consumer trust when we are registering it by reducing the chances of copying and misusing your brand. When purchasing any product, we basically select branded products, just like in clothes, denim, or Puma. Different type of brands are registered, and we select on the basis of their brand. We assume कि brand है registered है, that means क्वालिटी अच्छी होगी. अगर हमने ये परचेज किया कोई भी प्रोडक्ट क्लोथिंग में अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम किसी भी पर रिलाई तब कर रहे हैं कि उसकी ब्रांड चेक कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे उसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक ट्रेडमार्क के थ्रू होता है. So next. Okay, great. Moving with the next question. How do I know if my brand name is unique and available? We need to check the brand name on the IP site, and we will check whether the same name or similar name is already registered or not. Suppose you want to register your logo, we need to check the logo as well. If the logo is already registered, we can't apply the same. Nice. Moving with the next question. What risk do I face if I don't register my trademark? If we don't register, if you don't register your brand name, your mark, your trademark, someone else will register your mark. Then you cannot use your mark. अगर आपने उसे ऑफिशियली रजिस्टर नहीं करवाया और आप उसे यूज करते आ रहे हो, लेकिन आपकी गुडविल का फायदा जिसने फॉर्मली से रजिस्टर करवा लिया वो ले लेगा.
तो रजिस्टरिंग ट्रेडमार्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट. अगर आपने उसे सेल आउट तो कर रहे हो लेकिन उसे रजिस्टर नहीं करवाया. सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, लाइक यू आर अ क्लोथ मर्चेंट, तो आप क्लोथिंग में आप काम कर रहे हैं. आप अपना प्रोडक्ट सपोज 20 ईयर्स से सेल आउट कर रहे हैं लेकिन आपने उसे रजिस्टर नहीं करवाया था. आप सोच रहे हो कि मेरी तो ब्रांड वैल्यू वैसे ही है, मुझे रजिस्टर की जरूरत ही नहीं है. लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन हो गया सारा. अगर हमने उसे रजिस्टर नहीं करवाया तो कोई और उसे रजिस्टर करवा लेगा. सबको लगेगा कि उसी बंदे ने रजिस्टर करवाया जिसे हम पहले खरीद रहे थे. उन्हें ये नहीं पता कि किसी और ने रजिस्टर करवा लिया. तो आपकी ब्रांड वैल्यू जीरो, आपकी गुडविल जीरो, कोई और यूज कर रहा है और आप यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज दे विल लीगली चैलेंज यू as their trademark is registered that person name, not you. So registration is equally important. You are. Okay. Moving with the next question. What documents do I need to file a I'm audible? trademark Yeah. application? Yes, ma'am, you are. If a person register brand name, then the brand name is required. If they want to register their logo, that logo needs to be applied. So the logo is required. Goods, if they want to register for goods or services, the description basically, we need that thing also. So initial details are these. Rest depending on the category of applicant. Great. Moving with the next question. How long does it take to get a trademark approved in India? Normally, if we are applying a trademark, if we assume that no objection is received or no opposition is received, normally it takes 1.5 years. If no opposition or objection is received, else it can take more time also. Okay. Great. Moving with the next question. What is the difference between a word mark and a logo trademark? Wordmark is Ma'am, you are not audible. that particular mark. Not we are claiming for any particular logo of that mark. Suppose logo is in black color or particular font, that logo is registered. If we are registering any word mark, that is not a logo. That is only word mark. We are claiming only word mark, not logo. Suppose we can take example of Puma. So Puma is a word mark. Also Puma is a logo. Same Nike. Nike is also a word mark and Nike is also a logo. There is lots of example in current situations in current market as well. Yes, ma'am. Great. Moving with the next question. Can I trademark my slogan or tagline? Yeah, you can trademark your slogan or tagline, but that tagline or slogan must not be too descriptive and must not resemble to already existing registered tagline or slogan. It must be distinctive. Okay, it sounds good. Moving with the next question. What should a startup avoid when selecting a brand name? While selecting a brand name, I would suggest mark should be different, distinctive. It must not be descriptive. For example, if you are doing any food business, so it not be too generic or resemble or
too similar to existing mark. Otherwise, the mark will be objected or someone will oppose it in later stage. So mark should be different, not too generic, and it must not be too descriptive. Nice. Your next question is, can two businesses use similar names in different industries? Yeah, if we are registering a brand in clothing and someone else is also registering same mark in suppose metal metal industry, so these are unrelated items, then it can be registered. Nice. Your next question is trademark registration helpful during business expansion? Yes, trademark registration is well is equally helpful in business expansion. Suppose if we are registering a trademark, that product will have uh, higher brand value, goodwill. Similarly, if the wait a minute. Basically, trademark is an intangible asset. So it can add goodwill, brand value, also customer 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 confidence. It increases our brand valuation. If the brand is registered, we can also give franchisee to others. And if we want to sell the brand, we can sell it also. So आफ्टर रजिस्टरिंग या रजिस्टर होने से पहले भी हम उसकी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो इससे हमारे बिजनेस को ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है. या फिर अगर हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी हो गई जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, तो बिजनेस एक्सपेंड होगा उससे भी. Okay. It sounds good. Moving with the next question, why is legal compliance important for new entrepreneurs? Sorry. Why is legal compliance important for new entrepreneurs? Legal compliance is important for new entrepreneurs because if we are not uh, complying our law, it can create penalties, lots of uh, fees, late fees, legal disputes, legal notices, and it can affect the smooth running of business. So compliance is important for saving cost, avoiding penalties, late fees, and to ensure smooth running of business and growth of business. Okay, great. Your next question is, what basic registration must every startup complete? Every startup must complete the basic registration depending on the nature of startup. If it is the startup in the category of food, the food license, a basic requirement. Irrespective of the nature of business, GST is a basic requirement. Import export code if they are doing in the import export business. Similarly, trademark registration because every business nowadays is doing their expansion on the basis of online business, like Swiggy, Zomato for food business. Like if they are selling the products, they are selling it on Flipkart, Amazon. All they require trademark.
for every type of business. Similarly, uh, startup registration itself is also basic requirement. If they are doing some new, bringing new idea which can create employment generation, so startup is equally important. If they MSME also Udyam, it can be also known as. Similarly, different on the basis of state as well, like professional tax. So there are various type of basic. Um, this your moving with the next question. How can a company secretary help a business grow smoothly? Company secretary basically is a compliance officer. If we are talking about role of CS in growth of business, the CS ensure legal compliances, governance, documentation of the companies. We can take example of Indigo as well. If the company secretary have proper compliance over the company or ensured proper governance in the company, the dispute which occurred would not have occurred. The lack of compliance, we can say, in that case. Similarly, CS ensure structuring of business strategic alliance. He or she gives legal advice based on the nature of industry or business of company. So a CS can play an important role in the growth of business. Great. Uh, your next question is, why do food related business need FSSAI registration? And food industry needs FSSAI registration because it is mandatory by law to register the business under the Food Registration Act so that they can keep a check on the business industry which are operating in the food industry to check the nature of products they are selling, they are manufacturing, they are providing the consumers. So it is necessary by law so that it can also create a consumer trust and the compliance by law, legal compliance basically. Nice. Your next question is, what license should a small business get before starting? Ma'am, as already said, the for starting a new business, depending on the nature of business, basically, GST, trade licenses, food license, if food industry, trademark, it can be of any type of business. For if they want to register as a company, so they can apply for company registration. If want to register as a LLP, limited liability partner firm, so LLP registration can be equivalent. So startup registration and shop and establishment, we can say. So basic depending on the nature of business. ISO. Next question. Great.
Your next question is, how does compliance improve investor trust and confidence? Sorry, ma'am, please pardon. Okay. How does compliance improve investor trust and confidence? Compliance improves, compliance improves the investors' trust and confidence. Ma'am, your network is By not good. if the Ma'am, please, your network sorry, is not sorry, good, ma'am. am I audible, ma'am? Yes, you are. Hello, Yes, you are, ma'am. yeah, ma'am. Yeah, investors basically prefer complied organization. If they are investing their money, they want that business is running properly with a proper compliance. We can say अगर compliance नहीं होगा तो various type of penalties आएगी या अगर legal notice आएंगे तो उससे बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ज्यादा नुकसान होगा या इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें लगे उब रहा है अगर हम कंप्लाइंट चेक करें कंप्लाइंट कंपनी को देखेंगे बिजनेस में कंप्लाइंस होगा तो स्मूथली बिजनेस रन करेगा सो कंप्लाइंस इज इन्वेस्टर डिमांड्स कंप्लाइंस कंपनीज और businesses before investing. So secretarial audit or basically due diligence, we can say in a legal term, they before investing their money in any business, investors take a due diligence of the company or the organization they are investing so that they can check कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपना पैसा लगाया है ड्यू डिलिजेंस करवाकर वो कंपनी की ये प्रॉपर चेक करता है ड्यू डिलिजेंस से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है बेसिकली वो चेक करता है कि कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है और उससे वो अपने रिस्क को भी चेक कर लेता है और गवर्नेंस को भी चेक कर लेता है Yeah. IP, intellectual property, basically protects ideas, brands, innovations, and provides the registration of these ideas, designs, or creativity. So, intellectual property must be considered seriously because it protects ideas. Ideas, for example, if we are creating any type of idea of a technology, of any invention like patents, telephone was patented. It is covered under the IP Act, Intellectual Property Act. Patent is also part of intellectual property. Creativity, type any type of creations. For example, any musical composition, any type of books, literary items, any movie. All these are copyrighted. Brand names, registration, all these are covered under trademark. Also, these are intellectual property. So every startup must take intellectual property seriously. Yeah. Next. Great. Your next question is, what common legal mistakes do entrepreneurs make in early stage? In the early stage, by skipping trademark registrations, by skipping the necessary agreement registrations, necessary licensing, we are indirectly inviting hurdles in the growth of our business. Like if we are not registering our brand,
we are reducing our brand value indirectly and giving the opportunity to others to register our brand name in their name. बिकॉज हम अपने ब्रांड को इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन हम उसे रजिस्टर नहीं करवा रहे, तो कोई और हमारे ब्रांड को रजिस्टर करवा लेगा, तो ब्रांड नेम रजिस्टर उनके नाम पे हो जाएगी, तो इनडायरेक्टली हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये भी एक हमारी मिस्टेक है। और हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। हम दो पार्टी आपस में वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, तो इन फ्यूचर डिस्प्यूट अराइज होंगे। तो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए एग्रीमेंट में जो क्लोज होता है वो एब्सेंट होगा। तो अगर वो एब्सेंट होगा तो हम उसके बेसिस पे हम उसको रिजोल्व आउट नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। Or we are using a logo or mark which is similar to any existing brand. So in future, if we are using that mark, the existing registered brand or applied mark, they will file a legal notice, infringement notice against us. So indirectly, we are creating hurdles और अपने बिजनेस को हम नीचे ला रहे हैं, ग्रोथ पे ले जाने की बजाय उसे डिक्लाइन पे ला रहे हैं। Nice. Your next question is, how can proper IP protection help in fundraising? Proper IP protection helps in fundraising. Like if we are registering our creativity or innovation or are registering our technology, हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, जैसे कि मशीन बनाई थी, फुली ऑटोमेटिक मशीन, जिसने फर्स्ट टाइम ये इन्वेंशन की थी, जिसने फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी लाई थी, उसने अपने नाम पे उसे रजिस्टर ना करवाया नहीं करवाया होता, तो उसका क्या होता कि कोई और उसने उस तो उससे जिसने इन्वेंशन की थी उसकी जो फंड्स जो आज की डेट में वो अर्न कर रहा है फ्रेंचाइजी दे दे के उसको, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई और यूज करने के लिए उससे परमिशन लेता है, तो परमिशन को हम बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी उसको रॉयल्टी फीस मिल रही है, वो रॉयल्टी फीस से उस अपने बिजनेस को और ग्रो कर रहा है, तो वो नहीं कर पाता। तो इस तरह से फंड आईपी प्रोटेक्शन फंड रेजिंग को इंक्रीज करता है। सिमिलरली अगर आपने अपनी कॉपीराइट को रजिस्टर करवाया, अपने कोई सॉन्ग को या किसी मूवी को रजिस्टर करवाया, आप सेम नेम से कोई और यूज करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं कर सकता, अनलेस इन्फ्रिंजमेंट में फंस जाएगा वो। तो उस चीज में भी वो परमिशन लेगा, तो परमिशन लेगा तो फीस पे करेगा, तो इनडायरेक्टली फंड्स इंक्रीज होंगे। तो आईपी हेल्प्स इन फंड रेजिंग। ऑल्सो इन्वेस्टर ट्रस्ट को भी इंक्रीज करता है, कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। तो इंक्रीज द It sounds good. ग्रोथ वैल्यू। Yes, it sounds good. Moving with the next question, what role does legal accuracy play in long-term business success? Legal accuracy plays an important role in the long-term business success. If we are not using the proper laws, suppose हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम गलत लॉ की एप्लीकेबिलिटी कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म तो चलता रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म उसकी ग्रोथ नहीं आएगी, वो बीच में ही उसके हर्डल्स आने लगेंगे, वो बिजनेस रास्ते में ही रुक जाएगा। लाइक वी कैन से इंडस्ट्री, इफ वी आर रनिंग अ बिजनेस इन फूड इंडस्ट्री, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी फूड लाइसेंस को करवाना, लेकिन हमें
हमने करवाया नहीं उसे रजिस्टर, और हम वो बिजनेस को करते रहे कंटिन्यू। और उस टाइम पे हमारे ऊपर फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी, उसके ऊपर हमारे ऊपर पेनल्टीज आएंगी। गवर्नमेंट हमें बोलेगी हमें फूड लाइसेंस दिखाओ अपना, आप शो नहीं कर पाओगे। इनडायरेक्टली उसे हैंडल करने की कोशिश करोगे, अंडर टेबल सेटलमेंट करने की कोशिश करोगे। थोड़ा बहुत तो वो एडजस्ट हो जाएगा उस टाइम पे, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि करप्ट ऑफिसर्स थोड़ा तो एडजस्ट हो जाते हैं कभी कभी, वो भी रिस्क है। वो एक उसने बोल दिया कि मैं आपका केस करवा दूंगा रिजोल्व, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो आप ना तो उसे कोई लीगल चैलेंज कर सकते, जो आपने फीस उसको पे की थी वो भी खत्म। तो लीगली तो आई वुड नॉट एडवाइस कि हम गलत तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करवाएं। लीगली कंप्लायंस इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है सक्सेसफुली तभी चल सकता है जब हम उसको लीगली कंटिन्यू करते हैं, और जो हमारे पर एप्लीकेबल लॉज है उनको प्रॉपरली कंप्लाई करते हैं। सिमिलरली कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, उसके आपने जो मैंडेटरी फॉर्म्स है उसको फाइल नहीं किया, तो भी आपकी कंपनी के ऊपर पेनल्टीज आएंगी, लेट फीस आएंगी, आरओसी आपको नोटिस इश्यू करेगा, या आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ अगर कर देता है, तो आप उस कंपनी को कैसे उसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो प्रॉपर कंप्लायंस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। It sounds good. Moving with the next question, how can entrepreneurs build a legally strong and protect brand from day one? Ma'am, from day one, if we are starting any new business, we should choose a unique name. It must not be too similar कि ऐसा ऐसा सुना हुआ नेम है, मुझे यही नाम चाहिए। नहीं, ऐसा नेम रजिस्टर नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारा ब्रांड नहीं रजिस्टर, लॉन्ग टर्म में हमारा बिजनेस रजिस्टर नहीं होगा। तो हमें यूनिक नेम सेलेक्ट करना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी टू जेनरिक, एज आई हैड ऑलरेडी सेड। आप अगर फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस जैसा जेनरिक वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। लाइक आप क्लोथिंग ब्रांड में कर रहे हैं तो भी हमें उसका उतना जेनरिक यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा डिफरेंट है देन वी कैन अप्लाई, बट वी कैन नॉट गारंटी कि जेनरिक नेम आपका रजिस्टर हो पाएगा। वी नीड टू चेक वाइजली, and we need to complete mandatory registrations properly। रजिस्टर करवाना जरूरी है हमें। जो जो रिक्वायर्ड एग्रीमेंट्स हैं, लीगल कंडीशंस हैं, उनको प्रॉपरली कंप्लाई करना चाहिए। लीगल प्रोफेशनल्स की कंसल्टेशन एंड हेल्प जरूर लेनी चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर पाए। और अगर हमारे नेम को कोई और मिसयूज भी कर रहा है तो आपको प्रोफेशनल पर्सन अच्छे से गाइड करेगा कि हम उसके अगेंस्ट कैसे केस फाइल कर सकते हैं, उसको हम कैसे लीगली चैलेंज कर सकते हैं, एंड उससे हम पेनल्टीज या फीस कैसे रिकवर कर सकते हैं, इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट नोटिस कैसे दे सकते हैं। वो सब चीजें मतलब प्रोफेशनल हमें प्रॉपरली गाइड करेगा। तो प्रोफेशनल कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। Nice. Moving with the next question, what are the key services offered by Manisha Mittal and Associates? Ma'am, we are offering various type of services, like as I am a company secretary, so I basically offer secretarial services, all type of secretarial services, company registration, LLP registration, its day-to-day compliances, also striking of companies, also the required necessary workings of company, FEMA registration, FEMA licenses, FEMA compliances, and the trademark registrations,
copyright registrations, design registration, import export code registration, ISO, and all the necessary compliances of a company like labor laws, post act implementation, prevention of sexual harassment at workplace, and all the type of legal compliances basically. Design registration as well. It sounds it sounds good. Yes. Moving with the next question, how do you stay updated with changing company laws and regulations? Sorry. How do you stay updated with changing company laws and regulations? We need to update the provisions time to time on the MC available, the legal notifications applicable on companies. We need to check these updated provisions and implement on the companies. Okay, great. This is the last question for today's session. Yeah. How do you handle disputes between the shareholders or directors? Sorry. Um, how do you handle disputes between shareholders and directors? Disputes of which type? Between shareholders or directors? नहीं अंजी वो कौन सा डिस्प्यूट किस तरह का डिस्प्यूट मैम डिस्प्यूट काफी Um, तरह के होते हैं आपका कैसा Laws, डिस्प्यूट है ma'am, companies laws dispute. company laws dispute we need to check the proper provisions applicable on the parties if the director is of the companies at 2013 and after that we can resolve it as per the provisions. It sounds good. Um, Moving ahead, we would like to express our sincere gratitude to Ms. CF Manisha Mittal for being our guest for today at Conversation with Consultants. Your presence and engagement helped to make this event successful. Thank you for providing insight into your exciting journey. Thank you. Further, we would also like to thank our audience for listening patiently through the event. Thank you everyone for joining with us today and hope that everyone gained some knowledge from this event. Looking ahead, we are excited to announce that our next episode 25 Conversation with Consultants will come soon. We hope to see you all then. Thank you and we look forward reconnecting with you again. Do subscribe our YouTube channel and follow us all social media handles to stay connected with us. Goodbye and have a great day ahead. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.